Hello everyone and welcome to this session, and this is a very interesting session for the students who are preparing for NTA UGC NET Computer Science. आज इस सेशन पे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करने वाले हैं एंड आई होप ये जो सेशन है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। हर एक सेशन पे जितने भी हमारे पास सब्जेक्ट और वैसे टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ से कवर करूँगा। जैसे आज जो हमारी क्लास है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस शेड्यूलिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आज हम लोग यहाँ से कवर करेंगे। सेशन जो है इंटरेक्टिव है, आपके जो भी डाउट रहेंगे, जो भी आपकी क्वेरी है, हम इस सेशन पे कवर करने वाले हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारी एंड्रॉयड ऐप आपने इंस्टॉल नहीं करी है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारी एंड्रॉयड ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। द ऐप इज़ द नेम दैट इज़ डिजीमेंटो एजुकेशन और हमारे बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। जैसे अगर आप गेट की तैयारी करना चाहते हैं, आप यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, एनआईसी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, इसरो की तैयारी करना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज जो है हमने यहाँ से बनाए हैं और ये सभी जो कोर्सेज हैं हमारे एंड्रॉयड ऐप पर अवेलेबल है। और जो हमारी फ़ीस जो है वो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है ताकि हर एक बच्चा इस फीस को वो ले पाए। और रिसेंटली हमारे पास रिजल्ट आया है यूजीसी नेट का और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जेआरएफ को भी क्लियर किया है, बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर को भी क्लियर किया है। तो आप भी अगर इसी लिस्ट पर अगर आप जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट फ्रॉम डिजीमेंटो, देन यू कैन टेक अ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस गूगल प्ले स्टोर। And for all this information, you can call on this number, that is 9821 and you can get all the details from this website. So let us start. So let us see those who are online. Please reply in the chat so that we can start the session. And I think you have not subscribed the channel. Please subscribe to the channel because when you subscribe it, you'll get all the information, notifications, all these things from our side. So please subscribe to the channel because we have a timer for this chat. So you have to subscribe the channel and then after 1 minute, you will be able to start the class, right? You should be able to chat in this class, right? So chalo, let us start, right? So let us see the first question here. The first question jo hai, if you see the first question here, so that is an example of a non-preemptive scheduling algorithm is which of the following? And this is option number A is round robin algorithm. Option number B is priority scheduling. Option number C is shortest job first algorithm. And the last one is two-level scheduling. And you can see here, this is a question from UGC NET December 2018. Session is interactive. So if you have any doubt, please tell me. And you have to reply, right? So you should be try these questions. I got try karenge. And I'll try best my to explain both these questions from Hindi as well as in English. I'll try both these languages. Okay. So again, let us see the question again. So they're saying an example of non-preemptive scheduling algorithm. कौन सी ऐसी algorithm जो है वो non-preemptive है? So option number A is round robin. Option number B is priority scheduling. Option number C is shortest job first algorithm, and the D is two-level scheduling. And if you see, whenever you have round robin algorithms, so this is basically it is always preemptive. ये जो है वो हमारे पास preemptive है. And the second one is called as priority scheduling. So there are two versions of a non-preemptive priority scheduling. The first one is yours preemptive, and the second one is non-preemptive. Right. So there are two versions of this priority scheduling. And then shortest job first algorithm again. So there are two again variants here. The first one is again preemptive, and you can also find the same one is non-preemptive, right? So if it is preemptive, so that is will also called as SRTF. SRTF, that is shortest remaining time first algorithm. So that means it is talking about as a preemptive. Otherwise, we're calling that as a non-preemptive. And last option is two-level scheduling. So two-level scheduling, that means there are mixture of two algorithms here, but we don't know which are those algorithms they're using. So because I said this is an example of non-preemptive, right? So this question actually not clear.
right? So they have this exam, this question in 2008 December, but I think this is not so this is not, question is not so clear. So but I still assume that because non-preemptive, so I can take either B as well as C. Any one of them can be the answer here. Okay, and this is a question in December 2008, right? I hope you understand. Let us see the answer here. Nirmala, so please speak, uh, please in English. So not a problem. I'll try. So I'll try as much as possible. Akash, so C, I think that should be correct answer. And Abhishek, sir, please explain which book is most important for computer science paper 2. Actually, there is no one single book. You cannot have one single book. At least, you have to follow the standard books. That's it. Standard books जो है वो काफ़ी है. That is enough. And then you should be able to solve previous year questions, right? And whenever you take our classes, all these classes, we have comprehensive courses there. We cover all these concepts as well as solutions, right? Chalo. So let us solve the next question here. So this is the next question from December 2010. And here they are saying Windows is a dash operating system. Option number A, that is real time. Option number B is multi-user. Option number C is a preemptive, and D is non-preemptive. Again, so give me the answer here in the chat. So they are saying Windows is a dash operating system. Windows जो है वो किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है? क्या ये मल्टी यूज़र है? क्या ये प्रीएम्प्टिव है? क्या ये नॉन प्रीएम्प्टिव है? And the correct answer here is going to be option number B, right? So because Windows is basically multi-user, as well as we also have preemptive, right? So we also use preemptive, but actually that is one scheduling, right? So see, preemptive is fine, right? So but why we are not taking as a preemptive? Because that is only one algorithm. But in Windows we have multiple scheduling that we use, right? So for example, we have multiple uh, lines, right, for multiple algorithms, okay, schedulings. So there's some, this versions is also using FCFS, some of this, that is having uh shortage event, I think that is HRNF, right? So they have mixture, right? So but again, so B is the correct answer, that is multi-user. Yes, B is the correct answer. Chalo, let us solve the next question here. Which of the following scheduling algorithm may cause starvation? Which of the following scheduling algorithm may cause starvation? कौन सी ऐसी algorithm है जहां से आपके पास starvation हो सकती है? Option number A is first come first serve. Option number 2, that is round robin. Option number C is priority. Option number D is shortest process next. And the last one is shortest remaining time first algorithm. ऐसी कौन सी एल्गोरिथम है जहां पर आपके पास स्टारवेशन हो सकती है? So you can see here the first one is first come first serve. So first come first serve, we will not get any starvation. There is no starvation here. तो यहाँ पर आपके पास कोई भी starvation नहीं होगी. The second one is round robin algorithm. Again, that is a similar kind of versions of first come first serve, but we also have a quantum time. So there is no starvation. Means round robin algorithm में भी कोई भी starvation नहीं होती. Then priority scheduling, yes, there's a chance of starvation. यहाँ पर starvation हो सकती है. Shortest process next, right? So I think here also you can also get starvation. यहाँ पर भी आपके पास starvation हो सकती है. And shortest remaining time first algorithm, maybe you'll also get some kind of starvation here. So but in A and B cannot be a correct answer here. So I think you should be get answer as C, D as well as E. So that is why the correct answer here is option number B. B जो है वो आपका सही आंसर है. Okay. यार सबसे पहले क्या करूँ, प्लीज डू दैट, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम गेटिंग अ कॉल. जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज.
Okay, so sorry. So let's continue. The next question, I think this is already done, right? Next question is, consider following three processes. Let me see the chat also. Yes. So consider the following three processes with the arrival time and the CPU burst time in given milliseconds. And this is a question from July 2018. The Gantt chart for preemptive SJF algorithm is, अगर आप यहाँ से SJF algorithm आप यहाँ से यूज कर रहे हैं, तो what is किस order में you are going to execute these processes? Yes, try this question and give me the answer here. Consider the following three processes with the arrival time and the CPU burst time in milliseconds. आपका arrival time और CPU burst में कितना है हमारे पास. So to solve this, first of all you need a Gantt chart. तो हम लोग यहाँ से Gantt chart को हम लोग यहाँ से बनाएंगे. Okay, and you can see which is the algorithm, right? Algorithm is SJF algorithm. They're shortest job first algorithm, but they're not told whether it is preemptive as well as non-preemptive. So I'm going to assuming that it is non-preemptive. मैं assume कर रहा हूँ कि ये non-preemptive है. So here we have to start with the process P1. So we have to start with P1 from time 0 to till 7. I'm going to execute the process P1. So after the process P1 is finished, now we have two options. Either we have to use process P2 as well as we have to use process P3. But because it is having shortest job first algorithm, so that means here P2 is having the burst time as 4, which is the smallest one. So I'm going to execute the process P2. So it will be finished at time 11. And the last, I'm going to execute P3 and this will be finishing at time 19, right? And I don't think so they have given that it is a preemptive, right? It is non-preemptive, I guess. So in that case, I think the correct answer here is going to be option number, you can see which one is the correct one. So correct answer is option number C. C jo hai, that is the correct answer here. Okay. So that is 0, 7, 11 as well as 19. Okay. If it is preemptive, then this will be different, right? If it is preemptive, let me explain with the help of preemptive. If it is preemptive, then things will be different. अगर preemptive होता तो क्या होता? In that case, I'm going to execute the process P1 from time 0 to 1, right? So then the burst time of P1 is going to be 6. After that, I'm going to get process P2, right? So in that case, it is the smallest process. So that means from times 1 to process 5, I'm going to execute P2. So it is done. And after this, I'm going to execute the P1 again. So this will be finishing at time 11. And the last, I'm going to execute the process P3 at time 19. So this is done only when we have preemptive, right? So this will be very different. In that case, then B will be the correct answer here. So B will be the correct answer only when it is preemptive, right? And because they have not mentioned as preemptive or non-preemptive, in that case, if I say it is non-preemptive, then C will be the correct answer, right? But as of now, you can see C is the correct answer here. Okay, I hope you understand. समझ आया आपको? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से. If it is clear, let me know. So let us solve the next one. 5 jobs A, B, C, D as well as E. So we have total 5 jobs arriving in the ready queue. Their expected running time are all of these things. ठीक है, so जो expected time जो है वो यहाँ पर given है. So I'm going to say as a table. So this is representing A, this is representing B, this is C, this is D, or I should say this is representing as a processes, and this is your arrival time as well as your burst time, right? So I'm going to make a table first. Okay, after solving this table, then things will be much easier here. So we have the process A, B, C, D as well as E. So and here all
these ready rendered at the ready queue at time 0, so that means the arrival time for all of them is going to be 0. जो इसका arrival time जो है वो सभी का 0 होगा. And then we have the burst time, right? So burst time is going to be 9, 6, 3, 5, as well as we have x. ठीक है, for process E it is going to be x. Okay, so an x respective all the jobs ready in the ready queue at time 0, they must run in dash order to minimize the average response time if 3 is less than x is less than 5. Okay, तो आई थिंक आपको समझ आया होगा. लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन. वो एक बोलना चाहते हैं कि हमारे पास टोटल 5 प्रोसेसेस हैं, ठीक है, और ये सभी जो है वो रेडी क्यू पर अवेलेबल हैं. इन सभी का जो बर्स्ट टाइम है वो गिवन है, जैसे 9, 6, 3, 5 और x है. जो सभी प्रोसेस आई है टाइम 0 पर आई है, एंड दे मस्ट रन इन डैश ऑर्डर टू मिनिमाइज द एवरेज रिस्पॉन्स टाइम. यानी कि हम किस ऑर्डर पे इसको एग्जीक्यूट करें ताकि जो मिनिमाइज एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है सबसे कम यहाँ पर आ जाए. ठीक है, वो हम यहाँ से पूछना चाहते हैं, किस ऑर्डर पे हम लोग एग्जीक्यूट करें. ओके, इफ़ इस x की वैल्यू को बताया है कि जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी है और 5 से कम है. अब ध्यान देना, सो बिकॉज इन्होंने कभी भी इक्वल सिंबल को यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, सो दैट मीन्स x की वैल्यू 4 भी हो सकती है और x की वैल्यू 3.1 भी हो सकती है, 3.01 भी हो सकती है, और इसकी जो वैल्यू है वो 4.999 भी हो सकती है, बट दैट इज़ नॉट एग्जैक्टली 5, राइट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, राइट. इतना पार्ट आपको समझ में आया, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको समझ में आएगा. ओके, अब नाउ इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का, देखो हम लोग रिस्पॉन्स टाइम हम तभी मिनिमाइज कर सकते हैं, वी कैन ओनली मिनिमाइज द रिस्पॉन्स टाइम ओनली व्हेन वी हैव शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम इज अवेलेबल, राइट. इफ इट इज देयर देन दिस विल बी द बेस्ट वन, राइट. So in that case, what I'm going to do here is that first of all, I'm going to make a Gantt chart. ठीक है, so ये आपका Gantt chart होगा. So in all of them, सबसे जो छोटी process होगी that is going to be C. So I'm going to process C from 0 to 3. Okay, then this is done, right? After this, the next term, I'm going to find E, right? Because this E should be bigger than 3, as well as E should also be less than 5. So that means the next smallest process is going to be E. So I'm going to make E here, right? And after this, again, I'm going to same order. So I'm going to find D. After this D, I'm going to find B, as well as then we are going to find A. So in that case only you will be find what is the minimize average response time. आप यहाँ से एवरेज रिस्पॉन्स टाइम जो है वो यहाँ से इस ऑर्डर से ही आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट सेकेंडली आई डोंट थिंक सो दे हैव मेंशन्ड व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम दे आर यूजिंग. ठीक है, अगर आपको याद होगा, इफ यू चेक दिस होल क्वेश्चन अगेन, सो यू कैन सेंड चेक हियर कि उन्होंने कोई भी एल्गोरिथम्स के बारे में मेंशन नहीं किया है, तो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू फाइंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम या फिर SJF एल्गोरिथम को हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज अपार्ट ऑफ दिस व्हाट आई कैन डू हियर इज I can even use a round robin algorithm with a quantum time as 1, right? But I don't think so they mention it. So but again in that case what I'm doing here is I'm SJF algorithm को use करूँगा. So in that case, so the correct answer should be option number B. B जो है वो इसका सही आंसर होगा. बट आई डोंट थिंक सो दे हैव मेंशन्ड विच एल्गोरिथम ये यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं. ओके, अगर दिया होता देन थिंग्स विल बी मच बेटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. कंसिडर 3 CPU intensive processes P1, P2, P3 which requires 20, 10, 30 units of time arriving at times 1, 3 as well as 7 respectively. Suppose the operating system is implementing shortest remaining time first algorithms, then dash context switches are required at the beginning of the ready queue and required. Suppose that the context switch
at the beginning of the ready queue and at the end of the ready queue are not counted. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा गया है कि हमारे पास तीन प्रोसेसेस हैं. द फर्स्ट प्रोसेस इज P1, द सेकंड वन इज P2 एंड देन वी हैव P3. So for P1 the burst time is 20, P2 is 10 and P3 is 30, right? And their arrival time is 1, 3 as well as 7. So that means इसका जो order है, order is also mentioned. So that means I'm going to make a table here. So this is the processes. ठीक है. So then first of all I'm going to find P1, this is representing P2, this is representing P3, and their burst time here is going to be 20, this is 10 as well as 30, and their arrival time, right? I'm going to make a arrival time 80. So this value is 1 as well as 3 as well as 5, right? I think this is 7, not 5. This is representing as a 7. Suppose operating system using SJF. हमारे पास algorithm use किए SRTF, right? I think this side it is shortest remaining time first algorithm, so that is preemptive. वो preemptive है. Then dash number of context switches कितने होंगे यहाँ से. So that means I'm going to make a Gantt chart here. Okay. So time 0 to time 1, the system is going to be idle because the first process is coming at time 1. So that means I'm going to execute the process P1 till 3. So then it's the burst time is going to be 17. Now we have two processes. We have process P1 as well as P2. I'm going to check which of the following is the smallest one. The smallest one is the burst time of P2 is 10, and that is the smallest one. Actually, in all of these three, P2 is the smallest one. So I'm going to make a process P2 from 3 to 13, right? Context switches जो है, so that is going to be it happened here, right? So then this time is done. Then we have two choices. We have process P1 as well as P3. So P1 is the smallest one, so I'm going to execute P1 from 13 to 17. So that means it's going to be 30. And the last, I'm going to execute the process P3 from 30 to 60, right? I think so we have 1 to 3, right? So we just check. Let me check again. I get some calculation mistake might be there. So we have 30 and 30 plus I guess something like this, right? Something like this, because so after this 10, so next is going to be 17, right? Anyways, but the thing is they're asking what is the number of context switches, how many context switches are there. So this is a context switch, this is a context switch, as well as this is also context switch. So that means we have total 3 context switches. So that is why A जो है वो इसका सही आंसर है. So A is the correct answer of this question, right? I hope you understand, right? If it is clear, let's move on to the next question here. अगर मुझसे फटाफट कुछ डाउट है तो पूछ लो. If you have any doubt, please ask. So if it is clear, now let's move on to the next question here. The first question is, in the process management round robin method is essentially the preemptive versions of dash. Option number A is FILO. The second one is FIFO. Option number C is SSF, and D is longest time first algorithms. Again, in the process management round robin method is essentially the preemptive versions of dash. राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो है वो प्रीएम्प्टिव है, और ये किसका वर्जन है? तो ऑप्शन नंबर ए इज फीफो, ऑप्शन नंबर आई थिंक ए इज फिलो, ऑप्शन नंबर बी इज फीफो, ऑप्शन नंबर सी इज एसएसएफ, एंड डी इज राउंड रॉबिन. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी. बी इसका सही आंसर है. द करेक्ट आंसर फ्रॉम प्रतिभापाल एज वेल. आई थिंक प्रतिपाल आपको शायद मैंने काफ़ी टाइम पहले मैंने आपको चेक किया था. आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली, बट आई शायद I've seen your classes earlier. You are a very old subscriber, है ना? And hello Pilam, Neelam, and ठीक है. Hello Meera, how are you? चलो ठीक है, चलो let's move on.
नेक्स्ट क्वेश्चन, the problem of indefinite blockage of low priorities jobs in general priority scheduling algorithms can be solved using dash. Option number A is parity bit. Option number B is aging. Option number C is compaction. Option number D is timer. Again, the problem of indefinite blockage of low priority jobs in general priority scheduling algorithm can be solved by which of the following? The first one is priority bit. Option number B is aging. Option number C is compaction. Option number D is timer. इसका मतलब क्या है? What do you mean by this? Let me explain in हिंदी. So basically हमारे पास बहुत सारी प्रोसेसेस हमारे पास आती हैं. कुछ ऐसी प्रोसेसेस जो है वो फॉर एग्जांपल दैट यू हैव शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिथम इज देयर, इन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज देयर. द प्रॉब्लम इज स्टारवेशन. उन दोनों जो एल्गोरिथम है जो यहाँ पर प्रीएम्प्टिव आती है जिनकी प्रायोरिटी शेड्यूल्ड है, तो उस केस में आपकी स्टारवेशन हो सकती है. उससे बचाने के लिए हमारे पास एक और एल्गोरिथम आती है जिससे हम ये बता पाए कि वो ब्लॉकेज ना हो, मतलब एक स्टारवेशन ना हो उसके अंदर. तो उसके लिए द ओनली कॉन्सेप्ट दैट वी यूज़ दैट इज़ कॉल्ड एज एजिंग. हम यहाँ पर एजिंग हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं. एंड फॉर दैट देर इज़ अ एल्गोरिथम नेम दैट इज़ HRRN, राइट. सो HRRN एल्गोरिथम वी यूज़ सो दैट एजिंग के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कभी स्टारवेशन ना हो, राइट. सो उसकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहती है. तो दैट इज़ वाई आई थिंक HRRN इज़ अ बेटर एल्गोरिथम. ठीक है, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर हियर. ओके, चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ये आज का लास्ट क्वेश्चन है. बाकी कल से जो क्लास है थोड़ा और रेगुलरली मैं कोशिश करूँगा लेने की यहाँ से, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है. चाहता हूँ कि आज थोड़ा रिस्पॉन्स आपका आए. जितना आपका रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्लासेस भी यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा. आई इंक्रीज द क्लासेस एज पर योर यू नो वट यू आर रिप्लाइंग. ठीक है, तो ये उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है यहाँ से. So let us solve the next question here. They are saying consider a preemptive priority based scheduling algorithm based on dynamically changing priorities. The larger priority numbers implies higher priority when the process is waiting in CPU in ready queue but not yet started execution. Its priority changes at the rate that is A is equal to 2. When it starts running, its priority changes at the rate B is equal to 1. All the processes are assigned priorities value 0 when they enter ready queue, assuming that the following processes want to execute. The time quantum जो है वो यहाँ से given है. So quantum is 1. Then two processes want to ready queue simultaneously. The process does which has not executed recently is given priority. The first time for the process P1, P2, P3 and P4 will respectively will be which of the following? I think you understand. Let me explain the same problem in question. I'm going to explain in Hindi, right? तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास they said consider a preemptive priority based scheduling algorithm based on dynamically changes priorities. तो बेसिकली हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स हैं जहाँ पर आपके पास प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं और उसके अंदर आपने डायनेमिकली चेंजिंग प्रायोरिटीज़ हैं, यानी कि आपके जो प्रायोरिटीज़ है वो चेंज होती रहती है एज पर द नीड, राइट. द लार्जर प्रायोरिटी नंबर्स इम्प्लाइज हायर प्रायोरिटी. अगर आपकी जो प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है, जिसका नंबर ज़्यादा है, और जिसका जो नंबर है वो कम है, दैट इज लोअर प्रायोरिटी. Now, when the process is waiting for the CPU's ready queue, but yet not been executed, its priority changes at rate of is equal to 2. अगर आपके पास कोई प्रोसेस है, ठीक है, और अब तक हमने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, तो उसकी जो प्रायोरिटी चेंज हुई है एट द रेट ऑफ 2, यानी कि हर यूनिट के बाद इसकी जो प्रायोरिटी है वो यहाँ से चेंज होने वाली है. ओके, एवरी टाइम आपकी प्रायोरिटी जो है वो इंक्रीज होगी एट द रेट ऑफ 2. When it starts running, its priority changes at the rate of B is equal to 1. अगर कोई प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट हो चुकी है उस समय पर आपकी जो प्रायोरिटी होगी B is equal to 1. इसकी प्रायोरिटी यहाँ से
इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस इस समय पर एग्जीक्यूट नहीं हुई है अब तक, उसकी प्रायोरिटी 2 होगी। और अगर एक प्रोसेस स्टार्ट रनिंग, जब उसको आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो उस समय पर इसकी प्रायोरिटी यहाँ से आ जाएगी 1। All the processes are assigned priority at time 0 when they enter the ready queue, assuming that the following process want to execute. तो टाइम यहाँ पर हमें टाइम क्वांटम गिवन है। when the two processes want to join the ready queue simultaneously, the process which has not executed recently is given priority। ठीक है, मतलब कहने मतलब है हमने राउंड रॉबिन एल्गोरिथम को ही हमें यहाँ पर यूज़ किया है, जहाँ पर टाइम क्वांटम जो है आपके पास 1 है। ओके, बट होगा क्या कि टाइम 1 के बाद हमेशा इसकी जो प्रायोरिटी हम एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बेस पर हम दिखाएंगे कौन सी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, उसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच। द फर्स्ट टाइम एट द प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 विल बी टाइम विच रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम, तो उसका जो फर्स्ट टाइम जो है कब यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट है, समझ आया, इजी है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकलेगी यहाँ से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज वी हैव टू इंक्रीज द प्रायोरिटी आफ्टर 1 क्वांटम टाइम, सो मैं टाइम को मैं यहाँ से बना रहा हूँ, राइट। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज अ टाइम। ओके, so this is time 0, then we have time 1, then we have time 2। ठीक है, this is time 2, this is time 3, we have time 4 as well, this is time 5 and so on, right। तो सबसे पहले हम सबका टाइम यहाँ से बना दिया। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन करना पड़ेगा टाइम के साथ, राइट। इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। अब उन सब का द सेकेंड थिंग दैट दे सेड इज कि हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है, सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग अराइवल टाइम। तो पहला हो गया टाइम 0, 1, 2, 3, तो सबका टाइम निकाल रहा हूँ। ओके, तो अराइवल टाइम की जगह पर इंस्टेड ऑफ दिस आई एम गोइंग टू फाइंड समथिंग कॉल्ड एज प्रायोरिटीज़। किसकी प्रायोरिटीज़ सबसे ज़्यादा है, जिसने अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है उसकी प्रायोरिटीज़ ज़्यादा रहेगी। सो दैट मीन्स हियर एट टाइम 0 ओनली वन प्रोसेस is available, that is P1, so I'm going to execute P1, right। and the initially because वो start हो चुका है, so that is why the priority is going to be 1, right। ये that means whenever अगर कोई priority आपकी execute हो चुकी है, तो आपकी जो priority है वो यहाँ से increase होंगी। ठीक है, वो सिर्फ उसका बाय टाइम 1, और जो जिसने अब तक एग्जीक्यूट नहीं हुई है उसकी प्रायोरिटी आपके पास हायर हो जाएगी। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ फिर टाइम 1 हमारे पास आया है। ठीक है, अब टाइम 1 पे हमारे पास एक्चुअली क्या हुआ है कि विद दिस, ठीक है, तो इसकी जो प्रायोरिटी है अब हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। ठीक है, इनिशियली P1 की जो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, फिर हमने क्या किया कि इस केस में अराइवल टाइम है सबका। ठीक है, तो दैट मीन्स आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू फाइंड P1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस वो आपके पास 2 हो जाएगा। देन आई एम गोइंग टू हैव P2, वो आपके पास टाइम P1 पे यहाँ पर आपके पास आएगा टाइम 1, राइट। वो अभी यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई है और इसने एक टाइम तक इसको एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, तो जो उसका सर्विस टाइम है वो भी यहाँ से कम हो जाएगा। द सर्विस टाइम इज गोइंग टू बी, आई थिंक यू कैन फाइंड 3, राइट, बिकॉज 0 से लेकर 1 तक आपके पास सर्विस टाइम जो है आपके पास 1 हो जाएगा। ओके, एंड आफ्टर दिस जो प्रायोरिटीज है, राइट, दिस रिप्रेजेंटिंग है प्रायोरिटी किस बेसिस पर एग्जीक्यूट हो रहा है। कहने का मतलब है कि अगर इफ आई एम गोइंग टू मेक टाइम टेबल, आई मीन गैंट चार्ट, तो इसका मतलब है ये आपका गैंट चार्ट है। तो इसका मतलब है कि हम टाइम 0 से लेकर टाइम 1 तक हमने सबसे पहले प्रोसेस P1 को हमने यहाँ से एग्जीक्यूट किया है। ओके, एंड एट टाइम 1 के बाद नाउ यू कैन सी कि P2 की जो प्रायोरिटीज़ हैं, आई थिंक यू कैन सी बिकॉज P2 जो है उसकी प्रायोरिटी 1 होगी, क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूट कर दिया है क्वांटम टाइम के बेसिस पर। तो यानी कि हमने यहाँ से P2 को एग्जीक्यूट किया 1 से लेकर 2 तक, और इसका जो सर्विस टाइम है वो यहाँ से 0 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ से देखते हैं। फिर एट टाइम 3, नाउ टाइम 2 पर नाउ वी हैव सम ऑप्शंस। आई हैव ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन है बिकॉज इसका काम अभी फिनिश नहीं हुआ है, एज वेल एज हमने इसको भी यहाँ पर एग्जीक्यूट किया है। अभी इन दोनों केसेस पर भी हमें देखना है कि हमें किसको दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो उन सब की प्रायोरिटी डिसाइड करो।
ठीक है। सो P3 पे हम लोग चेक करेंगे दोबारा से। तो अगर मैं P3 अगर मैं चेक करूँगा, सो प्रोसेस P2 जो आपका ख़त्म हो चुका है बाय द वे, ठीक है, वो यहाँ पर टाइम 2 पर वो यहाँ से फिनिश हो चुका है इसकी प्रायोरिटी। फिर हमारे पास P1 की प्रायोरिटी जो है वो आपके पास 2 रहेगी, और फिर यहाँ पर प्रोसेस P3 की जो यहाँ पर रहेगी आपकी प्रायोरिटी, वो यहाँ से आपके पास आ जाएगी 0। ओके, तो यानी कि हम 0 से 1 तक हमने P1 को एग्जीक्यूट किया, फिर 1 से लेकर 2 तक हमने P2 को एग्जीक्यूट किया, और फिर हम 2 से लेकर 3 तक हमने P1 को ही दोबारा से एग्जीक्यूट किया था, राइट। तो इसको 4, ये 5, ये 6, ये 7 उस तरीके से यहाँ से बनाया है। ओके, देन टाइम 3, अगर आप टाइम 3 को हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, ठीक है, टाइम 3 पर अब हमारे पास सभी प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप चेक इट, तो एट दिस टाइम दो ये जो प्रोसेस P2 तो फिनिश हो चुका है, नाउ वी हैव 3 प्रोसेसेस, वी हैव P1, P2 एज वेल एज P3। अब एट टाइम 3 वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रायोरिटीज फॉर ऑल ऑफ दीज 3, P1, P3 एंड P4 की प्रायोरिटी हमें यहाँ से एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ओके, सो दैट मीन्स एट टाइम 3 वी हैव P1, ठीक है। सो P1 का जो प्रायोरिटी है ऑब्वियसली वो दोबारा से 1 हो जाएगी। फिर हमने P3 को हम 2 तक एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर हमने आई थिंक P4 तक, एंड दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी 0 अगेन, ठीक है। सो दैट मीन्स हियर टाइम फ्रॉम 0 to 3, एंड दैट मीन्स 3 to 4 आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस P3 हियर, ठीक है। तो इसका जो बर्स्ट टाइम होगा दैट इज गोइंग टू बी 1 हियर। ओके, एंड देन वी हैव टाइम 4 को हमें यहाँ से यूज़ किया है, तो लेट अस सी द टाइम 4। तो 4 पर अब हमारे पास देयर आर सम प्रोसेसर नाउ अवेलेबल, ठीक है। यानी कि हियर इफ यू सी P3, तो P3 का होगा प्रायोरिटी इज गोइंग टू 1, देन वी हैव P1 दैट इज गोइंग टू बी 2, एंड P4 इज गोइंग टू बी 2 हियर अगेन, ठीक है। एंड फ्रॉम 4 to 5 हियर, बिकॉज 4 से लेकर 5 तक जो मैंने आपको चेक किया था, दैट मीन्स हियर आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट P4 हियर। दैट मीन्स इसका काम जो है वो यहाँ से फिनिश हो चुका है। ओके, and after this, because this is also done, P2 is done as well as P4 is also done, now we have only 2 processes available, that is P1 as well as P3, and their service time is also same, right? So P3 is the service time as 1 and P1 is equal to 3. Okay, so now at time 5 I'm going to give P1 the priority is going to be 1 again, P3 is going to be 2, as well as P4 the priority is going to be 2. Okay, so that means here from time 5 to 6 I'm going to execute P1, okay, because के 300 प्रोसेस तो यहाँ पर आ ही चुकी है, so okay, and then 6 to 7 जो यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, so that is going to be P3, यहाँ पर P3 खत्म होगा, and the last I'm going to execute P1, तो यहाँ पर P1 को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये ऑर्डर इस तरीके से आपके पास आएगा। देखो आई थिंक टेबल आपके बन गया, मैं समझाता हूँ कि चीज़ें है क्या और क्यों समझ आया। लेट मी एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। तो प्रॉब्लम को समझने के लिए ना हमें 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको यहाँ से इधर समझना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली। ओके, बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपके पास कोई प्रोसेस है, ठीक है, समझना, दोबारा से समझना, अगर कोई प्रोसेस है अब तक आपने उसको अभी एग्जीक्यूट नहीं किया है, अब तक उसको वो सिर्फ क्यू पर आई है, तो उसका प्रायोरिटी आपके पास 2 रहेगी, और जो इस समय पर एग्जीक्यूट कर रही है तब इसकी प्रायोरिटीज 1 होगी, ठीक है। द ओनली थिंग इज जो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है प्रायोरिटी एट द रेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, राइट। दैट मीन्स मैंने इसकी रेट को इंक्रीज नहीं किया है, एवरी टाइम आई एम गोइंग टू से एज अ प्रायोरिटी एज 0, 1 एज वेल एज 2, 3 प्रायोरिटीज होंगी आपके पास। ओके, तो मैंने बोला है कि वेन एवर यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस प्रोसेसेस, जब आप यहाँ से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स अ प्रायोरिटी चेंजेस एट द रेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1, ठीक है, जब स्टार्ट हो रही है, और अदरवाइज यू कैन फाइंड द अगर उसके एग्जीक्यूट नहीं किए तो उसकी रेट आपकी 2 हो जाएगी, दैट मीन्स प्रायोरिटी आपकी यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी एवरी टाइम, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि हमें एक ऑर्डर मुझे निकालना है कि कौन सी प्रोसेस किस ऑर्डर पे यहाँ पर फिनिश हो रही है। एक्चुअली देखेंगे तो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट इतना क्लियरली मेंशन नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन पे उन्होंने रेट बोला है, द रेट इज इक्वल टू रेट, ठीक है।
तो रेट का मतलब है कि जो रेट है वो यहाँ से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट आई थिंक इसकी जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, देन यू अंडरस्टैंड कि उस रेट के बेसिस पर भी आपको चाहे इसका प्रायोरिटी सेम आएगी, आई मीन टू से बाय इंक्रीज करते रहेंगे तब भी आई थिंक यू कैन फाइंड द सेम वैल्यू हियर, तो सिमिलर वैल्यू रहेगी। क्योंकि जितनी हायर आपकी प्रायोरिटी होगी वो उतना हायर यहाँ पर रहेगा। और दूसरा ने बोला है कि हमने जिसकी प्रायोरिटीज हायर है हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे और ये हर टाइम पर हम यहाँ पर चेक करेंगे। अब जैसे लेट मी एक्सप्लेन, अब जैसे पहले प्रोसेस P1 की अवेलेबल थी, जो बिकॉज यू आर हैविंग P1, सो P1 की प्रायोरिटीज़ हमने डिसाइड किया, क्यों? क्योंकि हमने इसको एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, तो हम 0 से लेकर 1 तक हमने P1 को एग्जीक्यूट किया। अब जैसे ही टाइम 1 होगा तो अब हमारे पास 2 प्रोसेस जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे हेयर तो हमें P1 और P2 दोनों चीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। जब ये दोनों आपके पास अवेलेबल है, आप दोनों की प्रायोरिटीज़ दोबारा से चेक करो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या होगा कि बिकॉज यहाँ पर इसका बस टाइम आपका 3 है और इसका आपके पास 0 होगा, लेकिन इनिशियली बिकॉज हमने P2 को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे और P1 के चेक करेंगे तो प्रायोरिटी जो है अब यहाँ से चेंज होगी उस केस में। तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि उसके बाद मैंने यहाँ से P2 को एग्जीक्यूट किया है यहाँ से, ठीक है। और ठीक है, तो क्योंकि दोनों की वैल्यू को दोबारा से अगर चेक करें, क्योंकि मैंने अभी P2 को मैंने एग्जीक्यूट किया तो उसका टाइम 1 पे क्या हुआ था कि टाइम 1 पे यहाँ पर इसकी प्रायोरिटीज़ 1 होगी और P1 अभी P2 की प्रायोरिटीज़, क्योंकि मैं P2 को एग्जीक्यूट करूँगा तो उसमें पर इसकी प्रायोरिटी 1 हो जाएगी और इसकी प्रायोरिटी जो है आपके पास P1 की वो आपके पास 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने यहाँ से क्या किया, फिर उसके बाद हमने P2 को हमने एग्जीक्यूट किया आई गेस, ठीक है। P2 को आफ्टर दिस P2 अगेन आफ्टर एग्जीक्यूट P1 अगेन, ठीक है। तो बिकॉज इन दोनों में से इसकी प्रायोरिटी जो थी वो ज़्यादा हाई थी, P1 की जो प्रायोरिटी थी वो हाई थी, इसी वजह से मैंने यहाँ से नेक्स्ट P1 को मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट कर दिया। फिर हमने टाइम 2 पर अगर हम लोग जाएंगे तो सबकी प्रायोरिटी दोबारा से चेक किया, जैसे P2 की प्रायोरिटी 2 है, P1 की 2 है और P3 के आपके पास मैंने यहाँ से 0 कर दिया यहाँ से, ठीक है। एक्चुअली दैट शुड बी 1, राइट, इसको 1 कर दिया था आई थिंक इस तरीके से। लेट मी चेक हियर अगेन, ठीक है। हाँ, तो मैंने मतलब मैंने इसके यहाँ से मैंने P3 को मैंने इसको 0 कर दिया यहाँ से, क्योंकि मैंने इसको तभी इसको एग्जीक्यूट कर दिया था यहाँ से, ओके। और इंस्टेड ऑफ 0 की जगह पे आई थिंक आई शुड टेक एज वैल्यू एज 1, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली इंस्टेड ऑफ टेकिंग 0 आई शुड से द वैल्यू एज 1, तो 1 यहाँ से करेंगे। तो आई थिंक आई एम टू से कि मैं किस ऑर्डर पे एग्जीक्यूट किया वो मैंने यहाँ से डिसाइड किया यहाँ से, ठीक है। यानी कि पहले P1 को किया, फिर P2 को किया, फिर मैंने दोबारा से P1 को कर दिया क्योंकि इसकी प्रायोरिटीज़ हायर हो जाएगी, और फिर हमने यहाँ से P3 जो है अब उसकी प्रायोरिटीज़ यहाँ से इंक्रीज हो जाएगी, राइट राइट। सो बिकॉज द सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसने P3 हमने एग्जीक्यूट नहीं किया है, सो दैट मीन्स आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट P3, प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी हाई, ओके। लेट मी एक्सप्लेन इन वन वे, एक और तरीके से उसको ट्राई कर सकता हूँ, आई कैन ट्राई अगेन, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन अगेन, एक बार फिर से ट्राई करता हूँ तो शायद कुछ, इफ इट इज एनी इशू देन यू अंडरस्टैंड अगेन, ठीक है। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से चेंज करता है, बिकॉज आई थिंक रेट इज इक्वल टू 2 मैंने यहाँ पर एज्यूम किया है। तो लेट मी एक्सप्लेन अगेन, लेट मी ट्राई एक और तरीके से समझाया कर लेता हूँ। तो कंसिडर प्रायोरिटी एल्गोरिथम, प्रायोरिटी preemptive priority based algorithm based on dynamically changes priorities. The large implies the higher priorities when the process is waiting CPU, the ready queue, but not yet executed, ठीक है। Its priority changes at the rate of a is equal to 2 when the process is waiting the ready queue, but अब तक उसने एग्जीक्यूट नहीं किया, इस प्रायोरिटी चेंजेस, अच्छा, एट द रेट ऑफ समथिंग है, रेट को समझ लेते हैं यहाँ से। when it starts running its priority changes at 1, ठीक है। अगर आपने start running हो चुका है then that means the priority changes at 1. all the processes are assigned priorities value as 0, okay, all the priorities are assigned the priorities as 0 initially when they enter the ready queue, assuming that the following processes will execute, ठीक है। तो दो, let me try one thing. So initially what I'm going to do here is initially I'm going to use their priority, ठीक है। प्रायोरिटी मैं यहाँ से एज्यूम कर रहा हूँ, इनिशियली देयर प्रायोरिटीज आर गोइंग टू बी 0, तो मैंने आपको इधर मैंने 0 कर दिया है, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन इन दिस वे, तो आई थिंक देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है यहाँ से।
तो सबसे पहले एट टाइम टाइम ज़ीरो मैंने प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट किया, ज़ीरो से लेकर वन तक। ठीक है, तो हमने ज़ीरो से लेकर वन तक हमने एग्जीक्यूट किया यहाँ से। और व्हेन द स्टार्ट रनिंग, if all the process assigned at time 0 when they enter the ready queue, when it start running, जब start running its priority changes at the rate of b is equal to 1। ठीक है, तो कोई प्रोसेस स्टार्ट रनिंग होगी तो उसकी प्रायोरिटीज इंक्रीज होगी। सो दैट मीन्स दिस प्रायोरिटी विल बिकम वन, तो वो यहाँ से आपके पास वन हो जाएगी। ओके, ठीक है। देन आफ्टर दिस हम 0 to 1, so it is 1, and I think, let me check, so I think, then let me explain again। ओके, लेट एज्यूम कि हमने P1 को एग्जीक्यूट किया। फ्रॉम P1 को मैं दोबारा से, अगर मैं P1 को ही एग्जीक्यूट करता हूँ, तो दैट मीन्स फ्रॉम 0 to 2 अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, सो प्रायोरिटी शुड बी बाय रेट से, आई थिंक टेक अ वैल्यू एज 1। और अगर आपके पास P2 है, सो देन इट्स प्रायोरिटी इज गोइंग टू बी 2, राइट। सो दैट मीन्स बाय रेट ये भी आपके पास 2 हो जाएगा। और ये भी यहाँ पर, अगर देखिए, आई एम जस्ट थिंकिंग वन मोर वे, राइट। कहने का मतलब है कि मैं एक और तरीके से ट्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज आई कैन टेक द आंसर हियर, बट लेट मी एक्सप्लेन वन मोर वे। एक और तरीके से इसको हम ट्राई कर सकते हैं। सो दैट मीन्स फ्रॉम वन दैट शुड बी टू। ठीक है, सो दैट मीन्स P1 and P2 they are having the priorities is going to be 2 and 2, right? Okay, so after this we have P1 as well as we have P2. Those priorities is same, so maybe if I execute again P1 again, some 2 to 3, so that means this priority is going to be 3 and this priority is going to be 4 and this priority is going to be 2, है ना। so that thing can happen, तो ऐसा आपके पास हो सकता है। so that means this is going to be 1, right? and after this what I can do here is, priorities P2 is the highest one, so I'm going to execute P2 from 2 to 4, so this is going to be 0, so this is going to be priorities आपके द्वारा से finish हो जाएगा। then this is representing as maybe 4, maybe it is 5, ठीक है, and this is going to be again 4 here, so that means I think that cannot happen, वो नहीं हो सकता है कैसे ना। एनीवेज लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। लेट मी ट्राई अगेन, तो मैं चेक करके आपको सॉल्यूशन जो है मैं यहाँ से दे सकता हूँ यहाँ से। एक्सप्लेन, जस्ट गिव मी सेकंड।
ओके, आई थिंक आई शुड टेक सम टाइम, ठीक है, इसको चेक करके लेट मी एक्सप्लेन द सेम क्वेश्चन अगेन। तो इसको कल जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में आई एम गोइंग टू कवर द सेम, ठीक है, आई कवर द सेम इन द टुमारोज क्लास। ओके, चलो, एनीवेज आई होप यू लाइक द सेशन एंड लेट्स मीट द नेक्स्ट सेशन।